Save. I'm good. Hello. माशाल्लाह नहीं लग रहा तो आप बस इंस्टाग्राम टाइम पे होगा. Yes, Aisha, welcome back to Academy. Okay, बच्चे भी आ रहे हैं. I'm just waiting for a couple of more minutes. हम already late हैं, 30 minutes almost. Good. Nice you. Yes. रिहर्सल थी एक्चुअली फरवा थोड़ा सा रिहर्सल करवाई थी. ओके आज का टॉपिक भी हम फैशिज्म को फिनिश करेंगे, लिबर्टी को फिनिश करेंगे. पहले हाफ में सेकंड हाफ में हम पेपर को भी जाएंगे. सर वो डिनर दे रहे थे आप, डिनर नहीं रहा था, मैं तो दे रहा था. मैं तो कहा था आप प्लान करें मुझे बुला दें, मेरा भी प्लान है. मुझसे प्लानिंग नहीं होती. I'm always bad in planning. नहीं मैंने ऐसे नहीं होता. 78 बच्चे हो गए हैं, 3 बच्चे और हो रहे हैं. अरे बच्चा आप बताएं हम कहाँ हैं? जहाँ मर्जी हैं. अरे आप लोग CSS की तैयारी करें. अली CSS का एग्जाम दें फिर मिलेंगे. वालेकुम सलाम. आई गेस शुरू करें. मेरे ब्लैक बुक की अभी ब्लैक बुक खत्म नहीं हो गया सारी जगहों पे. आई गेस बाकी बच्चे आ रहे हैं. आई गेस स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में. लेट्स स्टार्ट विद दैट. हमने फैशिज्म को लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था. वी स्टार्टेड विद फैशिज्म और उसके हमने 3 मेन काजेस की बात की थी. 3 मेन काजेस ऑफ फैशिज्म और उनमें से एक था वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड, एक था कम्युनिज्म से रिलेटेड और एक था करप्शन या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो थे इटली के अंदर उससे रिलेटेड. So there were different kind of factors that were responsible for the beginning of the emergence of fascism in Italy. अच्छा अब थोड़ा सा बात करेंगे जर्मनी के अंदर कैसे डेवलप हुआ. How the fascism developed in Germany. So there are similar 3 reasons for that. 3 reasons. इटली के अंदर हमने 3 रीजन की बात की. जर्मनी के अंदर भी यही 3 रीजन. सिर्फ मामूली सा फर्क है. वेरी माइनर डिफरेंस इन जर्मनी. व्हाट इज दैट? वो क्या डिफरेंस है अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज. In Germany, again, the issue was that Germany felt betrayed, but more importantly, Germany felt humiliated after World War I. क्या humiliation थी? What was that humiliation? That humiliation was Treaty of Versailles, Mariam. Absolutely. Treaty of Versailles became the most important factor because of which German people, German society felt humiliated. Germany was punished heavily for World War I. They were to give financial reparations. जैसे हमने लिखा यहाँ पे, they had to lose their territories. They have to limit their military power, and they were blamed for the World War I war guilt clause. That guilt of World War I is with Germany, which is partly true as well. But the entire guilt was given to Germany, and that was another factor. So, Italy की betrayal किसी और सेंस में थी. Germany felt humiliation in railway. Even in Germany, Treaty of Versailles was called Treaty of Shame. It was called Treaty of Shame in Germany
because Germany was humiliated in this treaty. अच्छा, तो एक फैक्टर तो वो बन गया, and that became the reason why Nazi party was developed, जिसके अंदर फिर जर्मनी जो है वो हिटलर जो है वो लेकर आया. Nazism is again a nationalist party, a nationalist authoritarian system. वर्ल्ड वॉर 1 में कौन लीड कर रहा था? अभी काइजर 2 था, आई गेस. हम उर्दू में उसको कैसे पढ़ देते हैं, बट काइजर KAISER, काइजर डायनेस्टी थी, और काइजर 2 वाज रूलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप मुझे यूरोपियन हिस्ट्री का बंदा बता सके. अच्छा, नाउ एक फैक्टर वो बन गया. सेकंड मेजर फैक्टर वाज द राइज ऑफ कम्युनिज्म. Birth of communism was considered to be a threat to Germany, and it became one of the factors why he developed Nazism, and the core objective of Nazism was to counter communism and spread German state towards east. German territory जो है उसको east की तरफ मूव किया जाए, और एक तरफ सोवियत यूनियन था उस वक्त. That was one of the main idea of main purpose of the Nazi party, countering communism. And third factor was the weak government, the corrupt government. मैं फैशिज्म को रिसर्च कर रहा था जी, मुझे आइडिया लेट बच्चे जान प्लान कर रहा हूँ या सबको भी करना. ओके, we were talking about हमने फैशिज्म के काजेस को डिस्कस किया था. फैशिज्म कैसे डेवलप हुआ हम ये बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, और यहां से हमने शुरू किया कि ये तो इटली के अंदर हमने बात की, जर्मनी के अंदर क्यों डेवलप हुआ. जर्मनी के अंदर भी फैक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे. वन फैक्टर वाज, जिसका हमने जिक्र किया, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. In Treaty of Versailles, Germany felt humiliated. They felt that their nation was betrayed, humiliated. And that became one of the reasons why Hitler developed his own fascism in the form of Nazism. Nazi party को ऐसे Nazism कहते हैं, but था वो fascist ideology. Similarly, second major reason was the rise of communism, and rise of communism was posing a threat to German identity, nationalist identity of the Germans, and that became second major reason why Hitler developed fascist ideology. और शायद आप से कुछ लोग जानते हो, later on in 1930s, both Italy and Germany, along with Japan, established anti-communist alliance. Anti-Comintern Pact was signed by these states in 1936. I guess अगर मैं गलत हूँ, 1935 या 36 के अंदर they signed an anti-communist pact as well. तो जो शो करता है कि दोनों आइडियोलॉजीज का पर्पस सेम था. इटली, जर्मनी एंड जापान, ये तीन उनको ने मिलकर बनाया. Nazism is actually a fascist ideology. Nazism और fascism same है. Nazi party की वजह से उसको Nazism कहते हैं, but it's actually a fascist party. Yes, 30 देखते हैं आप लोग ऐसे प्रिसाइज रेट में, हम 36 है या 37 है, 36 है शायद probably, मुझे एक श्योर नहीं है, but है 30s के, mid 30s के. Now the point is that was the third major factor was the weak and corrupt government in Germany. जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद चेंज करके बनाया गया वीमर रिपब्लिक. It was reduced to a Weimar Republic, which was governed by the puppets of the West, and they were too weak, too inefficient. They were too weak, too inefficient to solve the people's problems. Weimar Republic, W-E-I-M-E-R, Weimar Republic, son. And the economic conditions of the German
became worse because of Great Depression of 1929. 1930s का depression कहते हैं, that started with the Wall Street crash of 1929. That weak government, that puppet government, was unable to protect the German population from the Great Depression of 1930s. They were the main factors behind the rise of fascism, and they were the main factors behind his theory of race as well. मैसेज स्पीड तेज है, थैंक यू मेरे लिए ब्रेक निकालने का, अब थोड़ा स्लो हो जाता है. The 1930s depression, the economic problems faced by the German population, became another factor that helped Hitler spread his Nazi party and promote his fascism. All of these three factors became the reason why Hitler promoted fascist ideology and the race theory in Germany. जी, हमने अगले से इसका जो मर्जी एंगल है हमने आंसर सेम होगा. कभी वो कहेगा कि जी 19 आप पेपर में जैसा पास में हुआ है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 इन द अर्ली हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, पता नहीं जिस तरह से भी कहे कंडीशंस क्या थी, वो सारी डिस्कशन यही आ गई. नाउ all these factors led to the rise of German fascism as well. Let's now focus on more important point, the principles of fascism. Principles of fascism. रेस थ्योरी से मतलब ये था जी कि उसने कहा था कि जर्मन रेस है, they are superior, the Aryan race is superior to all other races, and Germans are born to rule. They are civilized, they are ultimate chosen ones, and they have the superior intellectual skills, etc. इसको रेस थ्योरी कहते हैं. प्रिंसिपल्स क्या हैं फैशिज्म के, जो इटली में किया गया, जो जर्मनी में डेवलप किया गया प्रिंसिपल, बट क्योंकि इटली फाउंडर है, मुसोलिनी फाउंडर है, तो हम ज्यादा फोकस इटली के ऊपर करेंगे. Again, let's see the principles of fascism. Particularly हमारा फोकस जो है वो होगा इटली के ऊपर. अच्छा, नाउ एक अगर आपने किसी ने पढ़ी हो, डिफरेंट रीडिंग पढ़ी हो, तो जो मुसोलिनी था, he himself gave a statement जो बड़ी well widely quoted statement है उसकी. उसने कहा कि fascism is action not talk. Fascism is action not talk. यानी fascism जो है वो किसी theory का नाम नहीं है, कुछ अल्फाज का नाम नहीं है. It is how one governs. It is how one governs. Governance का नाम है, action का नाम है. This is what Mussolini said himself. Now, it means that fascist ideology, you can't find a book of fascist principles from Mussolini or Hitler. You won't find a theoretical explanation of what are their ideas about fascism.
our understanding of fascism, is derived from our ideas of fascism are derived from the policies of Hitler, policies of Mussolini and Hitler, and particularly from Mussolini's. उसकी जो पॉलिसीज थी उससे हम डिराइव करते हैं मसलिनी और हिटलर। मेन कैंप में भी कंप्लीट नहीं है अली, बिल्कुल नहीं। जिन बच्चों को नहीं आई मेन कैंप इज द बायोग्राफी ऑफ हिटलर। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो उसने जो जैसे गवर्न किया, द वे ही गवर्न, द वे ही डिड एक्शंस इन इटली, दैट इज द सोर्स थ्रू व्हिच वी डिराइव सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ फैशिज्म। फर्स्ट, nationalism. For fascists, nationalism is the religion. Okay. For आपका जो point है, Hitler's nationalism was a bit different. Yes, I agree. German conditions को adopt किया गया. Fundamentals are the same ones, but obviously they were different ones. और उसकी वजह भी यही है क्योंकि fascism की ideology written नहीं है. It is based on the actions of Mussolini. So therefore, Hitler's actions are obviously suited to its own race. वो अपने condition में apply कर रहा था. Fundamentals are same, although their practices were different. Obviously, Hitler का जो fascism है वो base करता है racism पे, इसका base करता है nationalism पे. Fundamental difference है. Nationalism. The fascists consider the nationalism as their religion. Not, they don't use the word religion, but it's as sacred to them as the religion is to the people. It is meant to, fascism is meant to encourage the nationalism among masses, but this nationalist ideology is xenophobic है, based on not just the love of the state, but also the hate for others. Xenophobia, आपने शायद सुना होगा. So it's not just about loving your own country, it is also hating others. Exclusivist ideology. It's an exclusivist ideology which excludes everybody, which hates everybody who is not theirs, who is not part of the state, who does not promote exemplify, who creates a difference between the people of one state and other states. Xenophobia का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक मीन अगर आप जल्दी से इसका आंसर देखना चाहती हैं, गूगल करें Emmanuel Macron differentiating between patriotism and nationalism. You'll find the answer for that. But it's a very good question, by the way. So nationalist tendencies promote की, xenophobic tendency promote करता है. That's what Mussolini did in Italy, and that's what happens. 2. That's true. That's true. Second, बहुत important.
it is no democracy. The fascist ideology is anti-democracy. It is meant to reject elections, it is meant to reject elected institutions. It does not mean exclusivist have to, it cannot be a democracy. It excludes people and doesn't include them. Instead, fascism promotes authoritarianism. It excludes people and it promotes authoritarianism. That's what Mussolini did. He abolished parliament. He ended elections. That's what fascism is about. 3. No liberties, rights. Point of view, no liberties and rights. The fascist ideology does not promote liberties and rights of the masses. Instead, it conditions them to the approval of dues. Dues to the leader. The leader. The leader of the fascist party can grant whatever liberties and freedoms he likes to. He thinks are necessary. So conditional liberty है, conditional rights. अच्छा, इसको हम कहते हैं rights and liberties are not your right, they are prerogative of the dues, D-U-C-E. They are the prerogative of the dues. If he thinks that it is essential to give liberties, then he will give it. Otherwise, he won't. So you can't claim liberties, you can't claim rights. People can't. Dues will be something. 4. Yes, Mahim. अच्छा, 1. बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4th में. State
controlled economy. The economy of the state shall be state controlled. जब राइट्स नहीं है तो इकोनॉमिक राइट्स भी नहीं, स्टेट कंट्रोल होगी इकोनॉमी. That state control can be exerted directly or indirectly. Yes or yes, obviously, जब nationalist है तो statism आ जाएगा. State-centric ideology है, true. State-controlled economy होगी, directly control या indirectly control, but state-controlled economy. Because it's an authoritarian state and therefore state will control everything. Their liberties, their politics, their economy. Another major principle of fascism is the one-party system. Now, there will be only one party in a fascist state. Only one party in the state, and that will be fascist party. All other parties are banned. All other parties are banned. And that one party is led by Deuce, the leader. That one party is led by Deuce or leaders. Even the officials will be taken from the fascist party. Even the government officials shall be taken from that fascist party. The fascist party shall have limited membership. The fascist party shall have limited membership. Its membership was competitive. जी ऐसे ही क्वेश्चन आता क्या ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करना भी ड्यूज का प्रेरोगेटिव नहीं है? यस उसी का है, बट ड्यूज किस में से सिलेक्ट करेगा? एक पार्टी से ही करेगा. That membership of the party is competitive and conditional to tests and examinations. दूसरे लफ्जों में, in other words, if you want to become a party member, you have to undergo through exams and you have to undergo interviews and practical tests. Yes, practical demonstration नहीं है मतलब आपके CSS में. And practical demonstrations. अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट. The purpose of this competitiveness is to get the efficient and loyalists.
CSS में ये चीज नहीं कहते. The criteria is to judge to the state and dues. State liability, dues in party leader के लिए liability. That is the criteria to get the membership of the party. अच्छा, Germany में ऐसा नहीं था. Germany was different in that. So one party system Swalajit तो सबसे पहले dues को कौन लेकर आया था? It was Mazzini himself who declared himself to be dues. तो ये obviously बात है, वो खुद ही बनाया था. तो माशाल्लाह को कौन लेकर आता है? वो खुद ही आ जाते हैं. 6 point बहुत इंपॉर्टेंट. Okay. State as the end. For fascism promotes state as the end and everything else as the means. Fascism considers state as the end and everything else as the means. इसको statism भी कहते हैं. Like Machiavelli, like Plato, like Hobbes. State is the end. That's his ideology here. State interests are way over and above the people's interest. And who will represent the state interest? The fascist party and the dues. They will represent what is in the interest of the state. Seventh and last rule of elite. Rule of elite. Fascism is a rule of the elite. The elite means the leaders of the fascist party are entitled to rule. The leaders of the fascist party are entitled to rule. The ordinary masses, the ordinary people have no role in governing the state. Masses have no role to play in statecraft. Only the fascist party have the right to rule. This is what fascism is. जी एक सवाल जो पहले बहुत ज़्यादा आया था और बड़ा रेलेवेंट है, वो है कि fascism क्या मॉडर्न दौर में भी वैलिड है. तो पेपर में लिखने के लिए आप जो बेसिक पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, मोदी साहब हैं fascist पार्टी, जो मोदी साहब हैं या RSS या बीजेपी दोनों को कह सकते हैं. उसके अलावा एक वही एग्जाम्पल है, fascist पार्टीज यूरोप में भी हैं, बट जो लीडर हैं करंटली वो ऑब्वियसली हम मोदी साहब को ही कहते हैं. इट्स अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट पार्टी वेयर देयर आर नो इंक्लूसिव एटीट्यूड्स. कोई पसंद नहीं है. लिबर्टीज ऑफ पीपल आर, yes, RSS is a political party. The liberties are curbed and all that. State is everything to them. A false notion of
superiority of nationalism is created by RSS and BJP and all that. हम बीजेपी की गवर्नमेंट को, मोदी साहब गवर्नमेंट को फाशिस्ट आइडियोलॉजी जरूर की। ये बेसिकली पॉइंट थी। और जो सवाल मुझे खुद नजर आ रहे हैं, एक सवाल आया था फाशिज्म में और कम्युनिज्म में फर्क क्या है, शायद एक सवाल आया था फाशिज्म और कम्युनिज्म में क्या फर्क है। फाशिज्म जो है वो स्टेट सेंट्रिक आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म इज अ ग्लोबल आइडियोलॉजी फंडामेंटली। Fascism is more like a political ideology. Communism is more like an economic ideology. तो ये fundamental difference जो है दोनों के दरमियान में ये। सर was CCP भी, वैसे CCP भी का इंडिया ये कुछ नहीं करती। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, बात करती वही है बट दिखना नहीं होगा। Yes, that's true, but you're glitching. Difference दोबारा मैं repeat करता हूँ जी। Fascism is a nationalist ideology, while communism is a globalist ideology. They want to establish a global, stateless society. While जो fascism है, बल्कि in fact अगर आपको याद हो मैंने कहा था fascism तो anti-communist है, because it does communism wants to end nationalist tendencies and nationalism. National identity को खत्म करने की बात करते हैं, तो ग्लोबल आइडेंटिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सल आइडेंटिटी की बात करते हैं। फाशिज्म तो स्टेट आइडेंटिटी की बात करता है। फिर कोर्ट में कहा कि फाशिज्म इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इट्स मोर लाइक अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हाउ टू गवर्न, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम शुड बी देयर, व्हाइल कम्युनिज्म इज प्राइमरली एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी व्हिच कंसीडर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, in fact the only factor as the factor that determines economic, political and social life and all that. So ये मेन डिफरेंस है। फाशिज्म में एक्सपेंशन का एस्पेक्ट नहीं है, एक्सपेंशन कंपल्सरी नहीं है ऐसा, बट ऑब्वियसली नेशनलिज्म है तो नेशनलिज्म कैन बिकम एक्सपेंशनिस्ट टू। आप बाद में क्लेम करते हैं इलाका भी हमारा था, ये भी हमारा था, गजवा हिंद वाली बात आ जाएगी ऐसे, तो फिर आप उसको एक्सपेंड करके नहीं लेके जा सकते। वे कैन बी पुट चाइना इज हम उसको तो यहाँ पे फिट नहीं करेंगे। इट्स आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग ना फुली कम्युनिस्ट है ना फुली कैपिटलिस्ट है, it's a kind of mixture of both. It is state controlled capitalism, so it has taken features of capitalism, it has taken features of communism, it's a hybrid system. Yes, China is socialist, true, but not completely socialist Asia. It's a kind of hybrid system. Saddam Hussein Iraq, no ideology at all, one man dictatorship. Any other question on that? So now what's the question in it? सोशलिज्म और कम्युनिज्म में फर्क क्या है? मेरे ख्याल में हमने इसको डिस्कस किया था जब मार्क्स को डिस्कस किया था। सोशलिज्म इज मेंट टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट इन अ स्टेट and ultimately when each state witnesses socialist revolutions, then aim is to end the entire state system and establish a global communism. Yes, it is a fascist. नॉर्थ कोरिया की बात की जाए उसको फाशिस्ट इडेयोलॉजी कहेंगे, कह भी सकते हैं, बट उसमें फाशिज्म कम है और कम्युनिज्म ज्यादा है उसके अंदर। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ज्यादा वहां पे कंट्रोल है। बट honestly speaking, इस तरह के जो डिक्टेटर्स होते हैं, they are opportunists. They use, they do not follow particular ideology. They take things from different points and all that. So it does have some features of fascism, it does have some features of communism, but predominantly communism. अच्छा, ओके सना, मैं रिपीट करता हूँ, आप जो लिखेंगे तो state as the end. For fascists, सना, the state is the ultimate end. State is the ultimate end and everything else is a means. State की हद तक कुछ भी करने को तैयार है।
ओके, लेट्स मूव जी, लास्ट पॉइंट है लिबर्टी वाला टॉपिक। हमने लिबर्टी तो नहीं किया हुआ। ओके, लेट्स मूव टू लिबर्टी। लिबर्टी, वायलेंस का रोल किस हद तक डिफरेंशिएट करता है मतलब फैशन में? अब देखिए, दोनों के अंदर जो वायलेंस है वो स्टेट के अंदर जो पावर रखने वाले लोग हैं, जो फैशिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, दे डू गेट इन्वॉल्व इनटू वायलेंस अगेंस्ट सोसाइटी। सो वायलेंस का डिफरेंस ऐसा नहीं है, because दोनों में एक पार्टी स्टेट अथॉरिटी को कंट्रोल करती है और स्टेट के पास वायलेंस का इख्तियार होता है। सो somehow both support the violence, whether from parties or whether from state. Those. Yes, sir, true. नाजिज्म और फैशन का प्रिंसिपल सेम है, नहीं कि थोड़ा डिफरेंस जरूर मौजूद है। देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं। Amar, good. Usually अगर ask kids on fascism, नहीं मेरे नहीं ख्याल, लेकिन पर ऑब्वियसली आप भी क्या पूछ भी सकते हो आपसे अरिशा की वो फैशिज्म, मेरा नहीं ख्याल कि किस्म बताने की जरूरत है। वी ऑल नो, यू नो क्रिटिसिज्म क्या बनता है, एंटी डेमोक्रेटिक है, फंडामेंटल राइट्स और नेचुरल राइट्स को खत्म करने की बात करता है, मल्टी पार्टिसिज्म को, डाइवर्सिटी को रिजेक्ट करता है। तो इट्स ऑल फुल ऑफ क्रिटिसिज्म। ईच पॉइंट ऑफ फैशिज्म इज सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। लिबर्टी, लिबर्टी के ऊपर भी अक्सर सवाल आता है, नोट खासकर आते हैं इसके ऊपर। लिबर्टी इज freedom of people, not liberty market, obviously. Liberty is the freedom of the people to take decisions about themselves. It is the freedom of people to take decisions and to act for themselves. इसका एक नेगेटिव मीनिंग भी कहा जाता है, नेगेटिव मीनिंग ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। और वो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव सेंस में देखा जाए, लिबर्टी इज the freeing people. Liberty is freeing people from the chains. अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रीइंग पीपल, यानी एक में नेगेटिव सेंस में चेन्स को तोड़ना और पॉजिटिव सेंस में फ्रीडम्स को प्रमोट करना। That's the kind of two different things. Yes, Rousseau's chains, true. Rousseau की chains मतलब Rousseau ने। अच्छा, लिबर्टी का concept आया कौन से? Obviously, different writers have contributed to the theory of liberty. Different writers की contributions मौजूद है और उन different जो contributions हैं उनमें सबसे पहली और मेजर contribution आती है जॉन लॉक। थोड़ा सा theoretical जरूर लिखेंगे। John Locke started, he gave the first major theory of liberty. Then Rousseau also promoted the theory of liberty, the concept of liberty. अच्छा, अगर आपको याद हो, जो लॉक है उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है तो उसके अंदर
तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो लिबर्टी की प्रोटेक्शन जो है दैट इज द पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट की बेसिक एम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो इसलिए लिबर्टी का रोल वहां पे आता है। रूसो, एवरीबॉडी न्यू, he wanted to undo the chains and free people from the chains. That's the negative liberty for the Zulfikar का सवाल है, freeing people of the chains of society and the government. फिर आगे बहुत से लोग भी हैं, अगर हम आगे जाते हैं, there are other people like J.S. Mill, J.S. Mill, John Stuart Mill. He is considered to be the most important thinker or theorist of liberty. उसका नाम John Stuart Mill is the most important thinker of the theory of liberty. मरियम आई विश मैंने पढ़ाया होता, बट मेरा भी फेवरेट में से एक आता है, बट आप उसको पढ़िएगा जरूर मरियम, अगर जिन्होंने पढ़ा है, इट्स अ वंडरफुल राइटर। और मैं आपको चूंकि बेंथम पढ़ाया था इसलिए मेरे नहीं पढ़ाया, बिकॉज बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी को ही लेकर चलता है टू कंस्ट्रक्ट द थ्योरी ऑफ लिबर्टी। इनफैक्ट J.S. मिल की जो थ्योरी है, आप पढ़िए, उसकी लाइफ पढ़िएगा बस, और कुछ पढ़ना पड़े आप वो J.S. मिल पे। जब आप उसकी लाइफ पढ़ेंगे आपको जर्मी बेंथम के और उसके बाप पे गुस्सा आएगा। जेम्स मिल जो फादर थे J.S. मिल के, और बेंथम जो थे, दे वर फ्रेंड्स एंड दे बोथ एक्सपेरिमेंटेड ऑन J.S. मिल। उसकी जिंदगी को एक्सपेरिमेंट बनाया, एंड ही वाज सो annoyed that he committed suicide. He thought of committing suicide as well. Anyway, but very interesting है J.S. मिल, one of my favorites, but unfortunately we don't have the time for that. On liberty ये बुक का नाम है। So J.S. Mill, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। Thank you for sharing with me. अच्छा, now फिर बात और भी पॉसिबल हो गई। ऑब्वियसली हेगल लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है, इमैनुअल कांट लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंकर्स जो प्रमोट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। नहीं, ये जरूरी नहीं, बट सो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन थी, ये आप जरूर देखिएगा। लिबर्टी का प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फोकस होगा दो चीजों के ऊपर, टाइप्स ऑफ लिबर्टी, और साथ हम डिस्कस करेंगे सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की टाइप्स क्या हैं और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से मेजर्स की जरूरत पड़ती है, हाउ टू प्रोटेक्ट लिबर्टी। So let's begin with types. There are different types of liberties. आसान है, yes, obviously. Don't you think that banning Trump's Twitter account and his social media account, Facebook, this is a violation of this concept of liberty? He didn't promote violence.